Okay. So, as I said, there is no specific agenda. Um, Initially, I thought of having this workshop to expose uh, people to the idea of the law of karma so that they can then sort of decide whether to enroll into the course that starts from tomorrow. I see more people have actually enrolled into the course than have appeared here. So, in any case, the idea of the free workshop um, is not really working in that way. But essentially, even before sort of I could get the numbers in terms of how many people are registering, I was thinking about what to talk about in this uh, workshop. So I thought, okay, instead of really giving a brief introduction to the idea of the law of karma and perhaps some of the implications of that and where it comes from, where it ends, and all that, I thought I would just talk a little about myself, uh, what got me interested in spirituality, and perhaps then we can talk a little about the law of karma. And if the audience has, if any of you have any questions around anything, actually, my journey or the idea of law of karma or spirituality in general, we can discuss all that. So yeah, it's pretty open. So I'll start with uh, sharing a little about my journey. तो जितना बोला जाएगा I'll say, and then sort of it will be up to you to sort of ask questions or share your thoughts. Then we'll take it from there. Uh, Interestingly, um, I was thinking, yeah, I would start with this. About 21 years ago, in 2005, uh, I was completing my 12th class. So in 2005, I completed my 12th. And it had already been 2 through 3 years that I had been going to Gurdwara regularly and listening to Kirtan. So I think I started in class 10, so 10th, 11th, 12th. Uh, so yeah, 2 to 3 years, something like that. So जा रहा था, I used to enjoy Kirtan a lot. Uh, I'm thinking, why did I enjoy? I don't know. But so of course there is in terms of Kirtan essentially is an attempt to connect with the divine. So one is that you feel connected, so there is an emotional aspect of it. There is a musical aspect to it. Of course, Kirtan is being sung. It's not just right, somebody's preaching, giving a lecture. There is music there. So there is a musical aspect, there is a emotional aspect of the words being spoken and essentially trying to connect with the divine. Then there is a intellectual aspect in terms of the ideas that they spoke about. Uh, all of those things uh, had a lot of impact on me. Rather, my experience was that I thought that okay, there is nothing else in my life that I've enjoyed more. So I've enjoyed Kirtan the most. Uh, so I thought, and by the way, at the same time, I was enjoying my studies also a lot, but not as much as Kirtan, but I was still enjoying my studies a lot. I was doing 10th, 11th, 12th, studying science. I was very, very studious. I used to just enjoy studying. Uh, those were a bunch of ideas. So it was not memorization for me or, okay, I'm studying this to get some score. It was perhaps, of course, there might be some understanding that yeah, I need to study to get a score, but overall, it was still a lot of fun because I used to enjoy making those connections, understanding how things work and all that. So yeah,
So I used to enjoy studies. So I was getting good scores there, whether in class 12. I was in the top 0.1% in the country. So I got a CBSC merit scholarship. Uh, so despite that, I decided that I would not continue my studies. I thought, yeah, since I enjoy Kirtan a lot, so why not make it a profession? I would do that thing that I enjoy a lot, and at the same time make money. Oh, that's the best case. So I decided that I would not continue my studies. I would do a course. Basically, in Amritsar, Punjab, I had heard that they offer a 3-year course for people aspiring to become professional Kirtan singers, right? So, uh, so yeah, I thought that I would just go there, become a Kirtaniya. So Kirtaniya, yeah, so the one who sings Kirtan. So that was the plan, and that is the reason I did not get into engineering because I did not fill any forms. No ITJ, nothing. I'm not sure. Even my preparation for ITJ was not very proper. I was studying class 11, 12 properly. I was enjoying that, but I don't think I was really preparing for any competitive exams also. But in any case, I decided to. But I think given my uh, understanding, I would have gotten into some decent engineering college if I don't think I would have cracked IIT, but a decent engineering college I would have gotten into. Uh, but I didn't even appear for any entrance exam because I thought, yeah, let's do Kirtan. So my mother was against the idea of making Kirtan a profession. So she was essentially saying that don't entangle your livelihood and your passion. So eventually, I think it made sense to me in some way. Some things happened over time, and then I also decided that okay, I would continue my studies. But by the time I decided the engineering, so there was no scope to take engineering exams or to get into an engineering college that year. So I decided to go to University of Delhi. So that was actually the reason I didn't do engineering. Otherwise, I would have also done engineering. But yeah, so yeah, it was 21 years ago when I sort of entertained this idea that, oh, why not do something and earn from that thing that you enjoy a lot in any case. So, of course, I'm not sure how much you're aware of my professional journey, but I've taken some steps sort of in to align myself with what I like. So I start. So after my MBA from Ahmedabad in 2010, got into Yes Bank. Whatever job I got, I just picked it up. There were not many options for me. I was shy, introvert, not good at speaking, and all the many issues. In any case, I was not even clear what I wanted to do in my life. So I got the job, whatever I could get. Uh, then I spent a couple of years, realized that this is not what I want. I would want to be in the education space where I can I thought that I would earn less because I was thinking I will do something in the University of Delhi space, so become a lecturer there. So I would earn less, but I thought, okay, at least I would enjoy my time. So in that way, I think so. One of the ideas I attribute to spirituality that got ingrained in me is that I've not been born to suffer here. Okay. So that's why this idea was so clear to me that okay, I don't want to live my life doing something that I don't like just to earn money. So that's why I could decide to leave my first job. I thought I would become a lecturer. I would earn probably half of what I was earning, and the career prospects would also be limited. But I thought, okay, even if I have to travel in a bus, I can happily do that if I'm doing something that I like.
I think this really came from my exposure to the spiritual ideas, and I'll briefly talk about some of those ideas and the law of karma at the end. बट ये था कि हाँ यार, मैं यहाँ पे सफर करने तो नहीं आया हूँ मैं। तो if this is not what I'm enjoying, I cannot do it for the rest of my life, or I don't want to do it any longer. So I left it, and then 6 months I wasn't doing anything. I was looking for a job. University of Delhi didn't happen. Some complexities. So it was a period. Then I think for the first 2 3 months I was fine. Then I was getting a little anxious. What's happening? 2 years after my IMA degree, I'm jobless, not sure what to do. So then of course, I was looking for something in the education space, and somehow EG happened. Uh, I joined EG, really liked working there. Worked there for 1.5 years, then again started thinking that I could do something more, more than the test prep space. Actually, the reason I left, or I started thinking of leaving EGMAT in 2000. So in 2012 November I joined, and by 2014 May I had left it. So 1.5 years. I started cultivating thoughts of leaving it. Uh, because in my mind I could do something more. I could impact more people. Uh, so this has somehow been important to me, that my job should be meaningful to me. Uh, and meaning, what makes a job, what makes my work meaningful is the kind of impact it is having on people. So I thought, uh, yeah, matlab, I could do something in the school education space. वहाँ पे I would be able to impact many more people. तो मैं टेस्ट प्रेप में क्यों घुसा पड़ा हूँ GMAT में? तो ये आइडिया था, बट आइडिया आने से जॉब थोड़ा ना छोड़ देते हैं। मतलब जॉब बढ़िया चल रही थी। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम everyone around, students and everywhere. People in the company. I was earning well. It was work from home. So everything was going fine. So why would I leave? It was difficult to leave. Um, at my first job, I was not enjoying at all. So that's why it was much easier to take that call to leave. So here I was enjoying my work. Uh, but then the team expanded, few things happened in the company, and then I was really put on the spot, and my insecurities were triggered. And then I remembered, oh, मुझे तो कुछ बड़ा impactful करना ही था. I don't know exactly uh, क्या था, but that's how it happened, that I was I was not able to handle the responsibilities that were given to me. And as a result, I was getting really insecure. So then, of course, this thought happened, that how do I go about it? And then I realized, okay, in any case, मुझे तो कुछ और करना था जो मैंने पाक कर रखा था. So I thought, okay, perhaps good opportunity to do something that I wanted to do. So left EGMAT with the thought that I would do something in the school education space without being clear कि exactly क्या करना है school education space में. तो लेफ्ट EG मैट. फिर मैंने कहा स्कूल में क्या करना है, बाद में सोचा तो लगा चलो वीडियोस बना लेते हैं. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग 9th क्लास मैथ की वीडियोस. दे आर स्टिल देयर समवेयर ऑन यूट्यूब. तो पूरा 9th क्लास का करिकुलम आई कवर्ड. वेरी रॉ वीडियोस. So we're just trying to communicate my way of thinking through those videos. But overall quality is quite raw in terms of the production quality. तो खैर फिर उसके बाद है ना, अगेन आई गॉट लॉस्ट कि अब क्या 9th की बना ली, अब 10th की बनाऊं, फिर 11th की बनाऊं, फिर 12th की, कब तक कितना बनाऊं, क्या करूंगा. तो देन आई गॉट लॉस्ट कि क्या है आगे. एंड देन समथिंग हैपेंड. आई स्टिल रिमेम्बर. वैसे इट्स अ weird kind of incident that triggered. So मैं कोरा पे था, एंड आई वाज रीडिंग समथिंग ऑन कोरा. तो किसी ने किसी से पूछा था कि स्क्रिप्चर्स में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर.
So how do I decide? Uh, uh, I think किसको follow करें या which one to follow or which scripture to follow and all that. Something like that. And then there was the most voted response was yes, there are contradictions, uh, but you have to really see which scripture has the least number of contradictions and then follow that. The answer seemed logical in one way that, yeah, if everything has contradictions, then you should go with the one that has the least number of contradictions, right? Basically, the best among the worst or best among whatever is available, right? But the answer also kind of really triggered me in a way that I thought, okay, what kind of nonsense is going on? Even if there is one contradiction, then the source is untrustworthy, right? कि अगर contradiction असली में है, एक तो है कि something that looks like a contradiction, right? Okay, so it looks like a contradiction, right? For example, we have paradox questions on the GMAT. So that looks like contradiction. That yeah, how do these two ideas align? And I can't make sense of them. And then somebody comes up with a scenario, and then you're like, oh yeah, okay, that makes sense. So the point is, there can be ideas that look contradictory, but if the ideas are truly contradictory, then the scripture is wrong in that uh, context. And if the scripture, which we call as coming from God and all that, is wrong even in one place, then the whole idea that it's coming from God and it's spoken by masters who have realized God all becomes junk. So I was really shaken up कि यार ये what kind of nonsense is going on. ये क्या क्या लोग लिख रहे हैं और इसको मोस्ट वोट कर रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में. So I so then I woke up. मतलब that's how I remember. Uh, it's been अच्छा हाँ, by the way हाँ, so now it's 10 years. 2015 this happened. 2014 15. Yes, 14 or 15 it happened basically. So again, so 2005 में I wanted to become a Kirtaniya. 2014 15 में this happened, and then something happened within me, I don't know. And then content started coming out, and I created a website which is there, which is Back to Gurbani. There are many articles, stories, even poems, which I had never ever written in my life or anything. Poems also came out. So this is how I'm putting it, came out, because that was the experience that I was not really consciously, in a way, very deliberately deciding to write a poem. They were just, the experience was that it was just coming out. So it was 2014, 15, basically. Uh, so I spent that, I think, 1.5 or so years reading spirituality and writing about spirituality. And whatever I wrote is now available on the website backtogurbani.org, on which I'm offering the course of Law of Karma. So yeah, so I was not earning anything. My bank balance, I think, at the end of 2015 was almost zero. It was actually at 30,000 rupees. Not that I had spent all the money. Of course, I had spent all the money in a way that there were some familial obligations I had to fulfill, give money to some relative, whatever, whatever. So eventually, all money got spent, and I also had taken a loan uh, for my MBA. So everything was paid off, but essentially, uh, by the end of 2015, I had just 30,000 in my bank. And I had monthly expenses of 10,000 rupees. I was giving 5,000 to my family, and then 5,000 I was spending on my own petrol and all that, whatever. So then I realized कि अब क्या करना है. मतलब the content has stopped coming, and I just felt within. So there is no rational argument that I can construct here. I also felt from within कि it's time to move on. And content had also stopped coming. My bank balance, so everything was just aligned. My bank balance had also just
I was just getting down to zero. I thought it's time to do something else now. Uh, so I took a loan of 1 lakh rupee from my brother because I took a loan because I didn't want to sort of ask money from my parents. Uh, right? 5 साल MBA करने के बाद you start asking money from your parents. That doesn't make sense to me. So I didn't want to be dependent. So I just took a loan. I was thinking of selling my car that I had purchased. But he said, कि नहीं नहीं तू लोन ले ले यार, कार मत बेच. So I took a loan. Um, but during that time, so when I was thinking कि अब क्या करूँगा क्योंकि राइट अब बैक टू कुर्बानी खत्म हो गई. 1.5 साल से आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू मेक मनी. नाउ व्हाट डू आई डू? During that time, I used to get very strong, uh, what do I say, gut instinct or very strong conviction, or what do you say, ideas, thoughts that I would get very rich, extremely rich. I would get goosebumps uh, even while I used to have those thoughts. So the thoughts didn't make any sense. They did not make any sense. Why? Because I didn't even know what to do. Okay, and I was also clear that I wouldn't get into anything for the sake of money. So I was not going back to corporate in any case. I didn't know what to do. I wouldn't do anything just for the sake of money. I had to also enjoy that thing. Uh, how would I make a lot of money? I had absolutely no idea. But I used to have those very, very strong thoughts. I would get goosebumps a lot of times while I was having those thoughts. So, in my spiritual journey, what I had learned was not to oppose those instincts, those ideas. One specific reference I would give is there is a series of books by the name of Conversations with God, written by Neil Donald Walsh. These books, I think there are overall 7 to 8 to 9 books in that Conversation with God series. Probably more have been added later. But I read those books back to back, I think in 2010 or to 12, something like that. So those books had a transformative effect. They really clarified a lot of spiritual ideas that I was struggling with. In any case, I had been exposed to Gurbani, right, as I said, from 2003 onwards. I was trying to understand, right, I come with a sort of science background, a logical bent of mind. So I was trying to understand those ideas. But Conversations with God, those that series of books played a very uh, significant role in clarifying many of those ideas. So one of the things was that we have those thoughts which do not make sense to us. Does not mean those thoughts are wrong. It could mean that our sense is limited to understand those thoughts. So I had already been exposed to these ideas. So when I was getting goosebumps and those extremely strong thoughts that I would be super rich, I was not opposing, I was not countering them. I was not getting afraid, oh, what if this doesn't happen? I'm enjoying thinking all these thoughts. What if it doesn't happen? I would be fool and all that. I actually started telling people that I would be very rich soon. Not everyone, but at least the people around me, my friends and some family members whom I could trust, that they would not joke about it. But yeah, I had so much conviction that this is going to happen. From where was that conviction coming from? I had no idea. Because as I said, nothing, I didn't know what I would do. I knew that I could do anything just for the sake of money. So कहाँ से आएंगे इतने पैसे? I had no idea. So then, in any case, 2016, बैंक बैलेंस जितना था, लोन ले रखा था भाई से. So I thought कुछ ना कुछ करना है, क्या कर सकते हैं.
क्या जीमैट कर सकते हैं? जीमैट में पता नहीं प्राइवेट ट्यूटरिंग कहाँ से मेरे दिमाग में आया, आई हैव नो आइडिया। तो मैंने कहा चलो जीमैट तो आता है, प्राइवेट ट्यूटरिंग करके देख लेते हैं, आई वुडंट हैव टू जॉइन अ कंपनी, तो मैं खुद कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड प्राइवेट ट्यूटरिंग in 2017. It exploded. And so in 2016 के end पे I was thinking कि यार, if it goes like this in 5 years time, I might be making X amount of money. So that thing that I was asking, yeah, I would make X amount of money in 5 years. That I think I was beginning to make in 2017, the very next year. So it just exploded. Uh, why did that happen? Again, I don't know, but it happened. We can only see correlation. Causation is what we draw in our mind, as I've written in my articles. But essentially, 2017, my business exploded. I was making a lot of money, um, and had the best kind of job that I could think of. I was teaching people, asking them questions, enjoying my time, doing something that I like, getting appreciated for what I was doing. Extremely flexible. I could decide my time, I could decide my days. I could do it from anywhere in the world. I could be on a vacation, do it, uh, making a lot of money. So everything that you could think of, that at least I could think of that I wanted in a job, was there in the work that I was doing. So yeah, so in 2017 it started. So Shreya, I'll let me just, otherwise my flow will get interrupted. So you can just park or write down your question if you have, then you can later ask. So 2017 it started, uh, and then yeah, it's been going on. Uh, as far as, so yeah, so I'll also like to share this. So 2000, I don't remember the exact year. It was 2023 or probably 24. I was I was making a lot of money back then. Uh, and right, GMAT happens in cycles, right? Because it is a admission cycle, as at least Kamaldeep and Shreyash are aware of. So the peak season essentially for a GMAT tutor starts in May. Okay. Uh, so May to, let's say, November, December, it's really, at least May to September, it's really peak. Then it starts to go down, and then by December it has really calmed down. So January, February, March are quite light. So in May 2022, no, I don't remember. I think it's 23, as far as I think. Might be Tarun, might be aware. I think we worked together, right, for a few months trying to do something in this space. What was that year? Do you remember? Any heavy happening? So ठीक है, year is not important. So I think मेरे ख्याल से it was 3 साल पहले, 2023. I was getting this very strong idea कि I should do something in the spirituality space. In 2023, I'm talking, or it could be 2024. I don't think, again, why am I going back and forth? Let's say 23. So I was getting a very strong idea, the very strong conviction from within, just as those goosebumps and everything. So again, something very strong coming from within, कि now बंद करो इस GMAT को, do something in the spirituality space. Now is the time. तो मैंने कहा पागल है यार, मतलब मई में कौन स्टार्ट करता है यार? May is the peak time. You're making a lot of money. The kind of money that I didn't even think ये possible है इस space में. तो अब क्यों छोड़ना है? मतलब दिसंबर में जब थोड़ा काम होगा पीरियड तब स्टार्ट कर लेंगे. May, how does it make sense to start the sort of whatever spiritual work in May?
when it's peak time for the GMAT. So whatever. So I decided कि यार मैं नहीं कर रहा है. So even though I was getting a strong, right, those thoughts from within कि कर ले, this is the time. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से मतलब कब से अनाउंस करता रहा हूँ कि इवेंचुअली तो मैंने स्पिरिचुअल स्पेस में ही कुछ करना है. दैट माई लॉन्ग टर्म इज टू बी इन दिस स्पेस, स्पिरिचुअलिटी स्पेस. बिकॉज क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दिस हैज हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. और बिकॉज दिस हैज हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, सो आई थिंक this can have the most significant impact on others' life. So if I think my work is about, if I measure the meaning of my work by the impact I'm having on people, then spirituality is a place to be in. तो वो तो मैं काफी लंबे टाइम से लोगों को बोलता ही था. स्पिरिचुअलिटी में जाना मेरे तो इवेंचुअली. तो तो फिर 2023 में वो आया वेरी स्ट्रांगली कि बस अब जा. तो मैंने कहा ऐसे कैसे जाऊं? मे इज नॉट द राइट टाइम टू गो देयर. दिसंबर में जाऊंगा. So I didn't go. I didn't do anything. I just took my sessions, earned money and all that. So दिसंबर जब तक आया तो मैंने कहा चलो अब सोचते हैं. तब तक कुछ था नहीं. अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा था. Nothing was coming from within. So the opportunity had been lost. Uh, that's how I see it. That's a call that I took. Uh, I prioritized earning money over something that I was really getting a strong sense for. तो वो मैं काफी टाइम से वैसे तो क्लियर ही, टू सम एक्सटेंट तो मैं क्लियर ही था दैट कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले भी बोलता था कि ओके आई मे बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर, आई मे बी एंजॉयिंग माय टाइम हियर, बट इफ इफ द soul is the term that I use, but we'll talk about it later. But सुनी तो हुई, राइट, सोल टर्म. सो बट इफ माई सोल, या जो भी कह लो अंदर से, वट एवर हु यू आर नाउ, उसका हो गया है कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स. बट यू स्टिल से कि नहीं 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 नहीं, व्हाई डू समथिंग एल्स when I'm making a lot of money? Then you will suffer, even though you may be making a lot. So this idea was there in my mind, but I thought कि ठीक है यार, मतलब मैं कौन सा, I'm not refuting that I would not do. I would not call it the spirituality. So I'm just saying, okay, let's do it in December. That's all. So, but December happened and nothing happened from within me. And then 2023, 4, 5, now it's 26. Business has come down significantly. It is somehow, I don't know exact numbers, but 1/4 or something of what it was. So it's easier to now do something in the spirituality space. So, right, so life has to make it easier for me to do what needs to be done. If it is hard, I won't do it. So, life figures out a way. कैसे काम कराना है इससे. So, but khair, so now I've started this, the law of karma. Uh, of course, it could have been other spiritual ideas also, not necessarily the law of karma. So, why am I doing this? Why am I doing this? क्योंकि मतलब सिंपल रीजन तो बहुत सिंपल ही है कि आई हैव गेन्ड अ लॉट. मतलब इतना तो मुझे काफी क्लियर ही है कि आई कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट in terms of external circumstances, my profession, my wealth, my relationships, everything, keeping everything constant. If you just take out spiritual ideas, the kind of impact that has spirituality or religion has had on my life, if you just take that out, I would be suffering even today. Okay.
keeping everything else constant. Again, I believe in it कि तो ये लोगों को लगता है, और ये ब्रेन वॉशिंग है बहुत सिग्निफिकेंट, that if you are not happy, change external circumstances. तो लोग पूरी जिंदगी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ही चेंज करते रह जाते हैं, तो डाउट भी नहीं आता कि डायरेक्शन इटसेल्फ कुड बी रॉन्ग, क्योंकि एवरीबडी एल्स इज आल्सो डूइंग इट. मेरे साथ में आई बीन फॉर्चुनेट that I turned inward, uh, and of course because of spirituality and religion. And I think I've gained a lot. ऐसा नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मैं सफर नहीं करता, सब होता है, बट आई थिंक द एक्सटेंट वुड हैव बीन फार फार हायर if spirituality or religion had not come into my life. और मैं देखता हूँ दुनिया में कि राइट, the variety of people that I interact with doing very well in their careers. Some people come from very wealthy backgrounds also. Physically, they are beautiful, handsome. So a lot of things are there, still suffering badly. तो तो यही इंटेंट है यार, कि मतलब मुझे लगता है कि यार इफ आई कैन डू समथिंग जिससे लोग खुश हो सकते हैं, एटलीस्ट आई शुड ट्राई दैट आउट. तो हाँ, मतलब मेन इंटेंट, मेन मोटिवेशन इज कि कैन आई मेक सम इम्पैक्ट. और इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब अगर किसी का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज बेटर्ड, दैट इज द इम्पैक्ट. अदरवाइज क्या, मतलब जी मैट स्कोर तो मेरे को काफी टाइम से फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि जी मैट स्कोर आने से क्या होता है, लोग तो रो रहे हैं वो जी मैट स्कोर आने से पहले जी मैट की वजह से रो रहे थे, जी मैट स्कोर आने के बाद किसी और वजह से रो रहे थे, तो रोना तो कांस्टेंट रहता है. आई हैव नेवर बीन रियली कंसर्न, मतलब नेवर तो नहीं बोल सकता, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि जी मैट स्कोर इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर मी. मतलब ऑफ कोर्स मार्केटिंग के लिए ठीक है, बट I am more interested in how people look at learning, skill building, they enjoy the process or not. So basically, essentially something that impacts their experience of life. क्योंकि लाइफ क्या है, डे टू डे एक्सपीरियंस है. अगर डे टू डे एक्सपीरियंस तुम्हारा खराब है तो अदरवाइज बाहर के सर्कमस्टांसेस जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है. तो या सो दैट इज द रीजन आई एम एंटरिंग इनटू दिस स्पेस. तो स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे आइडियाज हैं, मतलब. एंड अगेन मैंने से स्पिरिचुअलिटी, this is not another subject area to be studied. So ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है और ये क्या कहती है, मतलब फिलोसफी क्या कहती है और ये क्या होता है. तो दैट इज नॉट, आई थिंक, द वे आई स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री और द वे आई टीच ऑल्सो, राइट. गिवन दैट कमलदीप एंड शेरशाह, यू बोथ हैव बीन माय स्टूडेंट्स, कब मेरे से कभी मैंने ऐसा तो बोला नहीं जी मैट क्या चाहता है. मैं कहता हूँ लॉजिकल क्या है, क्या होना चाहिए. दिस इज हाउ आई अप्रोच. So this is how I approached understanding physics also. कि physics कह रही है कि ऐसा होता है, but does it make sense? मतलब I was trying to make sense of it also. कि असली में क्या होता है. ये नहीं कि फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है. फिजिक्स तो ठीक है जो भी कह रही है, तो फिजिक्स इज डिस्क्राइबिंग द रियलिटी, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रियलिटी में क्या होता है. तो उसकी डिस्क्रिप्शन फिजिक्स दे रही है, बट इट वाज नेवर लाइक कि फिजिक्स क्या कहती है केमिस्ट्री क्या कहती है, दोनों अलग अलग रहेंगे मेरे दिमाग में. आई न्यू कि दोनों रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो सिमिलरली जब मैं स्पिरिचुअल आइडिया सुनता हूँ, व्हेन आई हेयर दी स्पिरिचुअल आइडियाज और एंगेज विद दीज आइडियाज, सो इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, मुझे मुक्ति चाहिए, व्हाटएवर नॉनसेंस. मतलब इवेंचुअली तो सुख चाहिए था, आ, भी चाहिए मतलब, बट इट्स मोर अबाउट कि है क्या, सच्चाई क्या है. अगर स्पिरिचुअलिटी जो भी देती है वर्जन कि हु एम आई, कि मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, यूनिवर्स कहाँ से बना है, क्यों बना है, रैंडम कोइंसिडेंस है, क्या है ये चीज.
राइट? तो इसके जो भी आंसर्स आते हैं, सो आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉर कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हैं, फिलोसफी के हिसाब से हैं, इसके हिसाब से है, इसके मतलब मैं यहाँ पे राइट सब्जेक्ट मैटर स्टडी करने आया हूँ. द क्वेश्चंस आई हैव अप्रोच दीज क्वेश्चंस इन अ वे कि है क्या, असलियत क्या है. तो एटलीस्ट एज फार एज आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी कह लो, स्क्रिप्चर्स कह लो, दे आर टॉकिंग अबाउट कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, असलियत में क्या है, ना कि हमारे हिसाब से. मतलब ये एंगल से, ये इस एंगल से, बट ओवरऑल है क्या वो चीज, हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है. तो उस पूरे का स्पिरिचुअलिटी हैज एन आंसर, different answers to different questions, but they are all consistent. Okay, जो contradictions की बात से शुरू करी थी मैंने. So I have realized कि all those contradictions are at the superficial level, surface level. If you go deep, everything resolves and a coherent picture comes out. And उस coherent pictures को I'm trying to follow in my life to understand, to really go back if this is what the life is and this is how I should live. And overall, I see that my experience has been improving. uh, अच्छा चल रहा है. So I thought कि I can also share that with others. Uh, so perhaps और लोगों का भी experience might be better. So yeah, काफी बोल लिया मैंने. So yeah, that is the intent with which I'm starting this. Yeah, and I think it's going to go on for a long time, perhaps till the end of my life. Yeah. Okay. Now, questions, any questions or observation, thoughts, anything you feel like sharing? How did you differentiate between delusion thoughts and valid thoughts? What do you mean, delusional thoughts and valid thoughts? Sorry, it might have come out a bit strong, but I think my No, no, question is that's like fine. you mentioned. You don't need to sort of measure your words. Okay, you can just say whatever comes out. It's absolutely fine. Yeah, so you mentioned that you had these strong thoughts in 2015, right? So how did you know, like, yeah, I should entertain versus no, it's just, I'm just Well, strong. why would you not entertain? That's my question. Okay, the thoughts that I was getting was that I am going to be super rich, right? Hmm. That's the thought that I was getting. Okay, and they were coming from somewhere. I have no idea. I had no idea back then also, right? Uh, now, of course, you keep the choice whether to share it with others or not, right? So as I said, I was sharing it with those people who would not joke around those ideas, right? If they start joking around, if you're comfortable to joke around, you can also joke around those, then it's a different thing. But if you will get hurt and all that, or if you're a little dicey, then again share with only people whom you consider safe. But as far as your believing or unbelieving is concerned, so again, my point was simple: why not believe? The only thing that I could think was, or what I was even experiencing even then, the only thing that could come in the way of believing in it was the fear that if it doesn't happen, then I'll be hurt. What else? What else is the problem? Because it's not कि मैं जाके पैसे लुटा रहा हूँ. Just go throwing bundles of notes outside. I'm just having those thoughts that I'm going to be super rich, right? So what is the downside Right. of believing in those?
right? The only downside that I could think was that yeah, some people would get terribly hurt if that doesn't happen. And I was fine with that. If it doesn't happen. Why was I fine with that? But I think why was I fine? Because yeah, I was just happy the way I was living. So it's not that I needed a lot of money to be happy. So I was saying, yeah, if it happens, nice. If it doesn't happen, then I just need to make 10,000 a month. Got it. Yeah, I mean, Kamaldeep or Taran, if you have any questions, otherwise I have two more. या मेरा क्वेश्चन सीजे इसी के अराउंड था कि हाउ डिड यू ट्रांजिशन लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी मतलब you loved something the most, right, Kirtan? And when you were in school and you got out from school, you just wanted to like make a profession out of it. Hmm. फिर धीरे धीरे आपकी जर्नी में फिर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आए, मतलब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे आपके पेरेंट्स थोड़ा सा अगेंस्ट थे इस चीज के, बट सडनली देयर वाज अ, मतलब उस टाइम पे यू वर प्लानिंग टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ समथिंग दैट यू लव, लेकिन अचानक से ये लाइक टू गेट रिच एंड ये थॉट, लाइक इज इट लाइक सिचुएशनल कि जिस सिचुएशन में तुम हो तो वही वही गाइड करती है कि इवेंचुअली थॉट्स क्या आएंगे एंड इवन यू हैव टू मेक चॉइसेस आउट ऑफ इट? आई Yeah. मीन बिकॉज योर ट्रांजिशन वाज फ्रॉम समथिंग कि मतलब एक पैशन फॉलो करना, फिर बाद में एक रैंडम थॉट आ गया कि लाइक आई विल बिकम सुपर रिच, या ऐसा, फिर भी अचानक। आने की बात कर रहा हूँ। बैक टू कुर्बानी या कीर्तन की बात तो देखो, इट्स 2005 की बात होगी, वो 12th में था जब मैं। या बट आफ्टर लाइक यू गॉट आउट ऑफ ट्वेल्थ, मतलब आप पहले भी यही सोच थे कि गुरबानी मतलब इसी में कुछ मैं करूंगा, कीर्तन में, करेक्ट, राइट? करेक्ट। एंड देन मतलब फिर कॉलेज हुआ, ये सब हुआ, उसके एमबीए बाद फिर हुआ, जॉब हुई, फिर लाइक, मैट हुआ। या तो सिचुएशन चेंज, राइट? करेक्ट। तो सिचुएशन चेंज, तो मतलब उस वजह से वो थॉट्स आना, वो डिफरेंट थॉट्स आना शुरू हुए क्या? मतलब आई थिंक लेट्स से अगर आप IMA या ऐसे कोई कॉलेज से नहीं, आपका बहुत सिंपलिस्टिक सा रहता मतलब बैकग्राउंड, राइट? तो आई एम नॉट जजिंग, मतलब लेट्स से कि आई एम अहमदाबाद नहीं इसी लाइन में, तो लाइक डू यू थिंक कि वैसे थॉट्स आए होते हो उस केस में भी कि you wanna become super rich? Yeah, was it you were into some sort of comparison with others कि अरे यार मतलब IIM अहमदाबाद से पास आउट होने के बाद भी जो से थॉट आया था आपके दिमाग में 2 साल बाद कि अब क्या करूं मैं, मतलब जॉबलेस तो नहीं रहना है, तो was it because of that comparative state of mind, और मतलब किस वजह से? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये थॉट सिचुएशनल होते हैं कि कैसे। अब देखो, दो तरह के थॉट्स होते हैं। एक तो होता है आई वांट टू बी रिच वर्सेस आई विल बी रिच, राइट। एक होता है आई वांट टू बी रिच, तो ये आपकी डिजायर है। डिजायर फुलफिल होगी नहीं होगी, वो आपके अपने प्लान्स हैं, उसके चांसेस हैं, राइट। तो अगर आप बोलते हो अपने अंदर कि आई वांट टू बी रिच, हाउ डू यू फील? आई फील हैप्पी। यू वांट टू बी रिच में यू फील हैप्पी, या एंड आई विल बी रिच में। I mean, I will be rich में of course there will be more happiness associated with it. I want to be rich में मतलब फिर वो थोड़े से एक मतलब वो एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि कैसे हाउ हाउ विल आई बिकम रिच देन, तो वो जो फिर उसके जो उससे जो एसोसिएटेड थॉट्स हैं दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट फॉर मी। हाँ तो तो आई राइट, विल बी रिच। टिपिकली तो नेगेटिव होता है, जैसे श्रीहर्ष इज ऑल्सो सेइंग। मतलब टिपिकली कितना बड़ा एक लार्ज पोर्शन का नेगेटिव होता है। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ योर डिजायर, यू आर आल्सो थिंकिंग कैन यू फुलफिल नाउ। ओके। या सो आई वांट टू बी रिच में क्या मतलब इतना उसमें क्या पॉजिटिविटी है? Unless you are also thinking that the desire will be fulfilled, then that thought that the desire will be fulfilled is positive, not that having the desire, right? So I was in a different state. I was saying कि ये होगा, and I was not consciously arriving at some conclusions कि इस reason से होगा. It is just कि वो अंदर से आ रहा है।
इट वाज द थॉट वाज नॉट आई वांट टू बी रिच, कि मैं किसी से कंपैरिजन वगैरह आ ही नहीं सकता उसमें। द थॉट वाज आई विल बी रिच। हम्म। ठीक है, तो उसमें कंपेयर मतलब, वो तो कंपैरिजन की बात तो तब आएगी जब मैं कहूँ मैं डिजायर है कि मुझे रिच होना है, बाकी सारे हो रहे हैं, मैं क्यों गरीब बैठा हूँ। नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द थॉट। हाँ। ठीक है, तो उल्टा वो थॉट आता तो इट वुड हैव बीन बर्डन, कि अब मैं कैसे करूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो 1.5 साल से तो कुछ करा भी नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ वट एवर इट कुड गो ऑन। अब उसका आई में क्या कनेक्शन था, मतलब अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई खास कनेक्शन था। ओके। इन एनी केस उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन क्या था, एक बंदा 1.5 साल से कुछ नहीं कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता है क्या करना है, उसको ये तो पता है कि कॉर्पोरेट में नहीं जा रहा है, एंड इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, उसको एंजॉय करना है। अब वो सोच के बैठ के सोच रहा है कि ओह आई एम गोइंग टू सुपर रिच, ना कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है। अगेन आई वांट टू बी, अगेन मेक इट क्लियर कि इट्स नॉट कि मैं कॉन्शियसली बैठ के कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहा हूँ बैठ के, नो, दैट्स नॉट व्हाट वाज हैपनिंग। जैसे गट गट तुम्हें फील हो रहा होता है कई बार, आई एम नॉट श्योर हम वेदर यू फेल्ट इट एट एनी स्टेज इन योर लाइफ, कई लोगों को गट होता है कि अब ये होने वाला है, ये जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी। एक तो होता है कि आप सब्जेक्टिव कॉल ले रहे हो, एक होता है कि गट अंदर से बस फील हो रहा है कि ये होगा या ये नहीं होगा। ओके, या। गट था अंदर से कि ये होगा, उसको कोई लॉजिकल क्या था, मतलब उसकी मतलब कोई लॉजिक तो था ही नहीं उसके पीछे, बट देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फीलिंग फ्रॉम विद इन कि दिस इज गोइंग टू हैपन। हाउ विल दैट हैपन, आई हैव नो आइडिया, एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, क्योंकि फिगर आउट कर भी कैसे हम्म। सकता, मेरे दिमाग तो चल ही नहीं रहा था, मुझे क्या पता था क्या होने वाला है आगे। या आई कैन रिलेट टू इट समवट। मतलब अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि हम्म गट फीलिंग आती है, मतलब आई डोंट नो लाइक वेदर इट्स बेस्ड ऑन, बट वो फीलिंग मतलब एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो जाता है कि तुम सोचने लगते हो वैसा, राइट? हम्म। ओके। या, थैंक्स। Yeah, sure, sure. Um, yeah, so you said you shared that um about contradiction in scriptures part, um, and also you mentioned that one sentence like, "I didn't come to this world to suffer." Yeah, Um, Again, based on what I heard, there are a lot of gaps probably, but what I heard in one of these scriptures in Hinduism or Bhagavad Gita is that, if you have done all good things in past life, you go to heaven, or if you have done all bad things, then you go to hell. But if you are somewhere in between, you come into the humanly world where you have to, like, where you'll go through both, you know, good as well as suffering. So that seems a bit contradictory. So, but again, like I said, I didn't read it myself. I heard it from someone, and also I don't know my understanding. But yeah, there's so many gaps there. But हाँ, तो yeah, there are a lot of ideas. So even the ideas that I've been exposed to in Sikhism, Gurbani, or from variety of spiritual books. So a lot of ideas seem contradictory and sort of, they also look, okay, I'll go to heaven. And what do I do with that? If you think about it, right? Matlab, why would I do something that I'm going to get after I die? But that is what a lot of uh, religion or religious preaching seems to rest around. That, okay, do these things so that after death, oh, after death is too far for me. You have to tell me about my present, only then I'll do it. So that has been my approach. Uh, कि I'm not being, I don't, I can't really relate. Uh, and rather now I can, of course, Sadhguru, if you listen to Sadhguru, Jaki was right, Sadhguru's, uh, essentially he talks about that.
Don't talk about things which are not in your experience, otherwise you will get into hallucinations. अब क्या हेवन हेल एंड ऑल दैट, वो तो मरने के बाद होगा. तो अब मैं लाइफ में शुड आई लिव इन अ मिजरेबल वे सो दैट आई बिकम हैप्पी लेटर? दैट somehow doesn't make sense to me. Or I keep doing things which are meaningless for me because there is some meaning that I cannot think of. Again, I can't make sense of that also. For me, yeah, I really, as far as I think I can think, I've been driven by how I feel. If, right, for example, as I was saying, I'm not been born to suffer here. I'm not been born to live a meaningless life. No, I should at least strive to have a meaningful life. If it doesn't happen, that's a different thing. But I don't even try. So that is not what made sense to me. So a lot of, so the with spirituality, of course, there's a lot of nonsense also going on because it's all in the air. There's nothing you see. For example, the law of karma. Now, do you see the law of karma? You don't see any law, right? You don't even see the law of gravity. Any law you don't see. But with the gravity and all that, you see the effects. Now, what are the effects of the law of karma? Do you see those effects and all that? So a lot of one is, of course, there is a lot of nonsense spread by people who are just doing it for profession, as a profession. They also don't know, but they think, okay, somewhere there is merit in saying these things. But uh, a lot of spirituality is also in terms of metaphors. Basically anything, rather our lives in normal everyday language is also filled with metaphors. Anything that is not physical, we talk in terms of metaphors. For example, I was going down that chain of thought, right? I was going into that rabbit hole. These are all metaphors. अंदर कोई rabbit hole थोड़ी ना, अगर कोई सोचने बैठ जाए, CJ, where is that rabbit hole in you? Or CJ, where are those chains of thoughts within you? Let's dig them out. There is no chain of thought. There are only thoughts, right? But these are all metaphors we use in our everyday lives to communicate things which we can't see. Right? How do you communicate that I had that chain of that something was linked? You can say that, oh, I had those linking thoughts, or you could just say, okay, chain of thoughts. Everybody understands that you are using a metaphor. So in spirituality also, a lot of ideas are communicated in terms of metaphors. धीरे धीरे वो सब मिक्स हो जाता है कि कौन सा मेटाफर है, कौन सी रियलिटी है, and then so that's why you need to dig deeper to really understand what it is talking about. Otherwise, at the surface level, chain of thoughts, rabbit hole, you will think there is some rabbit hole within an individual. There is no rabbit hole, right? तो metaphors में बहुत सारी बातें होती हैं. So that makes things a little complicated at times. Got it. Thanks. Cool. Anything else? Yeah, CJ, I have one question. Like now, um, in my experience, I've realized one thing. Like many a times, like I have judged people and judged people for like, मतलब normally let's say work में कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ, like some weird, like do the wrong thing, but I don't know like मतलब वो किस सिचुएशन में था या किस सिचुएशन में नहीं था, एंड लेटर ऑन आई कम टू रियलाइज दैट लाइक अरे जो मैं सोच रहा था उसके बारे में या जो जजमेंट मैंने उस बंदे के बारे में बनाई, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वो सही था अपनी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वट एवर ही वॉज डूइंग वॉज राइट.
सो ये चीज रियलाइज करने से पहले मेनी a times I've started like judging people, and as you told, I remember you, I think you told this in last session, like अगर आप दूसरे बंदे को जज कर रहे हो तो वो जजमेंट तुम्हारे खुद के ऊपर भी अप्लाई करता है, मतलब लाइफ में तुम खुद को भी उतने ही उस ही एक्सटेंट तक, मतलब उस ही पेस से जज करोगे। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ, मतलब ये ऐसा माइंडसेट क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलप हुआ है, एंड दूसरा हाउ टू लाइक ओवरकम दिस काइंड ऑफ कि आई जस्ट वांट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज लेटर ऑन लाइक मेनी टाइम्स आई हैव रियलाइज्ड कि बंदे जो होते हैं वो कई बार सिचुएशंस उनकी ऐसी होती हैं, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ है कि वो सही थे और मैं बहुत जल्दी शायद उनके बारे में गलत सोच गया। तो क्या क्वेश्चन है कि कैसे हुआ और कैसे चेंज करना है? आई मीन यस, कि ये माइंडसेट आता कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है, मतलब ये स्टेज, मतलब हमारी, मतलब कैसे कौन सी स्टेज पे डेवलप हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट टाइम ये हो जाता है शुरू में, आई डोंट नो कॉर्पोरेट में, कॉलेज में, किधर। तो हर जगह ही होता है बट ये तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, मतलब पेरेंट्स भी जज ही कर रहे होते हैं। क्या होता है, मतलब हर जगह जजमेंट ही होती है। वी आर वेरी क्विक टू जज एवरीथिंग। ये सही है गलत है, पूरी बाइनरी बना रखी है हमने। ये बंदा सही नहीं है, ये गलत है, ये बिहेवियर गलत है। ग्रे में जाना, समझना चीज़ों को, नुआंसेस में जाना, दूसरे को एक कंपैशनेट लिसनिंग देनी कहाँ होता है? बहुत कम होता है। मतलब नेचुरली कई जगह होता है, तो फिर वहाँ के बच्चे भी सही निकलते हैं जनरली, राइट। बट प्रेवलेंट तो नहीं है। तो वही है बस, जो आजकल चल रहा है हर जगह से ही है। ब्रेन वॉशिंग कोई आराम से थोड़ी ना हो जाती है, बहुत तरीके से होती है। पेरेंट्स से होती है, मीडिया से होती है, फ्रेंड से होती है, कलीग से होती है, एवरीवेयर देयर इज। तो बीच में दिस दिस इज व्हाट इट सीम्स लाइक टू लिव, कि ऐसे ही जीते हैं, हम कैसे जीते हैं। तो बट हाँ, फिर वही बात है, एज आई वाज सेइंग, कि लॉ ऑफ कर्मा की अंडरस्टैंडिंग में जाओ। वैसे तो अब लॉ ऑफ कर्मा में अब तो नॉर्मल बेसिक बायोलॉजी ऑफ बॉडी में ही चले जाओ, तो आजकल वो बोलने लग गए हैं सारे, और स्टडिंग दीज केमिकल्स एंड ऑल दैट, कैसे रिलीज हो रहे हैं, बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं। आई थिंक बट आई वुड, जितना थोड़ा बहुत मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो जो बायोलॉजी है वो भी काफ़ी बात करने लग गई है इसके बारे में। बट खैर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। और कॉमन सेंस भी बात है कि यार, जो जजमेंट्स तुम्हारे दिमाग में आइडिया स्टोर्ड है कि कोई एक्स करता है तो उसका मतलब है वो वाई है, तो वो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाओगे? मतलब देर इज नो रीजन, वो लगेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम देख रहे हो कोई कार बहुत तेज चला रहा है, तुम कहते हो व्हाट एन इडियट। तो जब तुम तेज चलाओगे तब भी तुम ये सोचोगे कि मेरे को सारे इडियट ही समझ रहे हैं, और मैं खुद खुद भी तुम इडियट ही समझ रहे होगे अपने आप को एक लेवल पे। फिर तुम रीजन दे रहे हो, नहीं नहीं बट मुझे तो अभी जरूरत है अभी तो मुझे कोई राइट। सी है। तो रीजन देने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि पहले you have been judged by your own self that you are an idiot. That's why you're giving your own self reasons कि नहीं नहीं, but I'm doing this for these reasons. But अपने आप को क्यों रीजन दे रहे हो? तो तुम्हें पता ही है। अपने आप को इसलिए दे रहे हो because there is already a judgment in place. So then you are trying to defend your own self within your own self. That's a circle that you're in. The circle was created outside, but वो inside उसकी reflection आनी है। This was not told to you. तुम्हें लग रहा था वो बाहर ही रहेगा, वो अंदर साथ साथ ही आता है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कर्मा इज, दिस इज व्हाट बेसिक स्पिरिचुअलिटी इज। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही यहाँ से आती है। तो आया तो सारी सोसाइटी से ही है, और सोसाइटी से आया, और तुम भी सोसाइटी का ही पार्ट हो, तो तुमने भी आगे लोगों में बांटा है। तो और वैसे भी कोई भी बांट क्या सकता है? जो उसके पास है वही बांटेगा। अगर मेरे पास जो है मैं वही बांटूंगा। अगर मेरे पास दुख है तो मैं दुख ही दूंगा तुम्हें। खुश है तो सुख ही दूंगा। मिक्स हूं तो मिक्स दूंगा तो राइट, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो अब वो चेंज कैसे करना है? चेंज अपने आप होता है। Once you see your foolishness, once you see the kind of nonsense, once you see it as nonsense, it automatically changes. अब उसमें क्या हो जाता है कि उसमें when you see some nonsense, then immediately you want to run away from it. So that's just panic. That's another kind of nonsense that you are engaging in. पैनिक से मतलब डरने से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली
If you see something nonsense, something unwanted within you, just seeing it, कि this is unwanted, and then gently, आराम से उस पर काम करने से it will just go away in some time. Now, but दूसरी टेंडेंसी आती है कि जैसे ही अनवांटेड देखा, now there is panic. Now this should not be there for even one moment. Something you have cultivated for years and decades should disappear within seconds. That doesn't make sense, and that's not how it happens. But we don't even understand that, and then we become driven by fear. Now, fear से क्या होता है? That the basic another idea of another implication of the law of karma is that you attract what you fear, which is a kind of a very dangerous idea to hear. Because some people will become even more fearful after this. But if used carefully, this can help you. Okay. Basically, it can harm you also. क्योंकि जब आप फेयरफुल होते हो तब सोचो कोई आगे बता दे, ओ डोंट बी फेयरफुल, डोंट थिंक ऑफ फेलियर, अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट फेलियर. देन यू लाइक, ओ भाई साहब, what am I doing in my life? I'm attracting failure all the time. So then it can sort of backfire. But if used, if you think, if you understand it, this is how life happens. The basic understanding, basic meaning of law of karma is you get what you choose always. Now, what do you choose? You choose your thoughts, words, actions. And by those, you also choose your feelings. So feelings आपको बताते हैं कि किस तरह के thoughts आप चल रहे हैं. You may not be aware of. आप सोच रहे हो कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे फेलियर नहीं चाहिए. बट आपके थॉट्स बताएंगे कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो. अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, then you're thinking of failure. Anxiety is essentially that you are focusing on the negative. Excitement is you are focusing on the positive. Running from failure and running towards success are contradictory things, not the same thing. Running from failure attracts failure. Running towards success attracts success. बेसिकली जिसके बारे में सोचोगे वो आएगा. ये बेसिक लॉ ऑफ कर्मा का फंडामेंटल है. क्योंकि तुम जो सो कर रहे हो वही आएगा. You sow by thinking, by focusing, by giving your attention to that thing. That's how you choose. तो मैं फेयर की बात कर रहा था कि तो हाँ, तो फेयर नहीं करना है. बहुत कुछ है अंदर, धीरे धीरे सब खत्म हो सकता है. जो भी एनीथिंग दैट इज अनवांटेड, और अनवांटेड काफी कुछ है, बट सबसे ज्यादा अनवांटेड है दैट दिस पैनिक, क्योंकि दिस कैन रियली हार्म अस. तो उसमें आराम से चलना है. इफ यू जस्ट स्टार्ट टुडे 1%, you start changing, in a few years you'll be a very different person. Don't try to bring about rapid change. Be sincere, be focused, but don't, no, there is no need to panic. Gradually everything can be accomplished. So I believe you're saying कि thoughts हैं तो thoughts को आने दो, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे. नाउ यू हैव टू चूज कि मतलब कौन से थॉट के साथ आगे जाना है, राइट? यही इवेंचुअली आप बोल रहे हो, राइट? हाँ, थॉट्स आपको चूज करने हैं. थॉट्स पर आप सप्रेस नहीं कर सकते हो. बट आई हैव अ क्वेश्चन कि मतलब थॉट्स, आई थिंक लाइक दे कम फ्रॉम द योर एक्सपीरियंस, राइट? तुम वही सोचोगे जो तुमने एक्सपीरियंस करा हुआ है. अब तुम्हारा एक्सपीरियंस ही लिमिटेड है तो. नहीं, देखो, जो मतलब ये पूरा साइकिल है. अब तुमने एक्सपीरियंस किस चीज को कैसे करा है, वो भी आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है. आपका एक थॉट्स एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट एक्सपीरियंस भी थॉट्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अब तीन ही लोग हैं यहाँ पे. इज इट अ फेलियर फॉर मी? फ्री वर्कशॉप है, राइट? या तो अब मेरे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? अब तो पहली बात, तो अभी तो मेरा थॉट ही एक्सपीरियंस बनाएगा. अब हो सकता है मैं पुराने से सोच के आ रहा हूँ कि यार फ्री में तो 30-40 लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए, तो फेलियर है. तो और क्योंकि अब पता नहीं पुराना एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा होगा, कम लोग आते हैं, पता नहीं, जो भी है. तो
पहली बात तो एक्सपीरियंस कहाँ से बनता है? एक्सपीरियंस तो मेरे थॉट से बन रहा है। हाउ आई एम आई इंटरप्रेटिंग? अगर कहूँ कि तीन लोग सही है, बढ़िया शुरुआत हुई है, तो बढ़िया। इसी को बोलूं बस तीन ही लोग थे, बेकार है। तो एक्सपीरियंस कोई ऑब्जेक्टिव चीज थोड़ी ना है। एक्सपीरियंस तो सब्जेक्टिव है, आपने कैसे इंटरप्रेट करा है उसको। मेरे साथ, राइट, साफ बात है, मैं तो, मेरे सामने कितने स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब एक स्टूडेंट, एक्सट्रीम की बात करूं तो एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो 1.5-2 साल बाद भी उसके ऐसे ऐसे सेशन होते थे जिसमें ही वुड गेट एवरी सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग। 1.5-2 साल करने के बाद, प्रिपरेशन क्या, मेरे से स्टार्ट करने के बाद। मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लो परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल से शुरू किया था, बट 1.5-2 साल बाद भी कई ऐसे सेशन, सारे नहीं बट कई ऐसे सेशन हुए थे, ही वुड गेट एवरी सिंगल थिंग रॉन्ग। एट द एंड ऑफ दैट सेशन ही वुड से कि बढ़िया था यार, आज बहुत सीखा मैंने, सीजे, थैंक यू सो मच। आई नो कि ये एक्सट्रीम है, बट इट्स वर्थ मेंशनिंग कि ये पॉसिबल है। नहीं तो लोग तो सोचते हैं कि पहले सेशन में सब गलत हो जाए तो लोग तो वहीं डिवास्टेटेड एंड दे विल जस्ट लीव द जिम एंड गो टू अ केव। ऐसे ही होता है। मतलब और लोगों का क्या है, मेरे साथ भी होता है, ऐसी क्या बात है। अगेन एज आई सेड कि अब मैं अगर तीन लोगों को इतना ऑब्जेक्टिवली आपसे बात भी कर पा रहा हूँ कि तीन लोग आए हैं, फेलियर देखूंगा नहीं करूंगा, इतना मैं अंदर सिक्योर हूँ कि इनके बारे में बात कर सकता हूँ, तो ये सब दिस इज कम फ्रॉम वर्किंग ऑन माई सेल्फ थ्रू एक्सपोजर टू स्पिरिचुअलिटी। कि है क्या लाइफ, क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं, कैसे हैप्पीनेस आती है, इन चीज़ों के बारे में बात सोच सोच के, समझ समझ के, इम्प्लीमेंट कर करके। उसने क्या बात का आंसर दे रहा। नहीं, मैं समझ गया। या बट वही है कि मतलब मतलब बस मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, मतलब जो आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस भी मतलब वो थॉट से ही बनते हैं, राइट? एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस। सोच के देखो आप, कोई भी एक्सपीरियंस ले लो। हाँ, बट तो मतलब उतना एक्सपोजर हो गया कि आई कैन थिंक वेरी वाइडली, आई बिलीव, बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू स्टार्ट यर लाइक थिंकिंग अबाउट थिंग्स। हम्म। और जो वो थिंकिंग है दैट इज नर्चर्ड विद इन यू फ्रॉम द सोसाइटी, आई बिलीव। क्या मतलब और कैसे सीखो, तो वो चीज को, लेट से समवन इज फेसिंग, समवन इज जस्ट सराउंडेड बाय द नेगेटिव एनवायरनमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब उस बंदे को मतलब इस, लेट से आपकी तरह सोचना है एक लेवल पे, या मतलब जिस मतलब एक नए थॉट प्रोसेस से सोचना है जिससे वो लाइफ में थोड़ा सा अपने में चेंज लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, तो उसको एक्सपोज होना पड़ेगा उन चीजों के थ्रू, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, otherwise if you like tell this thing to somebody who has some that sort of experience, तो उस बंदे के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इवन टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ द थॉट्स दैट आर कमिंग इनटू हिज और हर माइंड, राइट? वो तो है ही है, मतलब, पर एट द सेम टाइम देखो, हाँ मतलब नेचुरली बाहर से एक्सपोजर होगा तो वो बेटर ही है, बट हर इंसान के अंदर बेसिक आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हर इंसान के अंदर एक, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो बेसिक आइडिया है स्पिरिचुअलिटी का वो तो है, तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है बट सच्चाई वही है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। मैं बार बार स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरा ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। इट्स नॉट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड what spirituality is saying. I have to constantly, of course, say, and which is honest and which has to be said. Otherwise, it will look like कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैंने अल्टीमेट जो रियलिटी विच स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट, वो तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी है फॉर श्योर। ओके, बट हाँ, मतलब मुझे यही लगता है कि वही सच है, लगता है मुझे, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब वो क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो ये कह रहा है, देयर इज, इट टॉक्स अबाउट वननेस। आपने अद्वैत वेदांत वगैरह सुना होगा, कभी वर्ड अद्वैत का नाम सुना है कभी या आप? या अद्वैत, और जैसे हमारे में भी, सिखिज्म में भी, रहता द फर्स्ट लेटर जो स्क्रिप्चर स्टार्ट होता है वो वन से है। और वन से भी लोगों को बड़ा मिसलीडिंग, बड़े ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हारा एक भगवान है, मेरा एक या फिर एट द मोस्ट लोग सोचते हैं नहीं नहीं, एक ही कॉमन भगवान है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का ये आइडिया नहीं है। एसेंस एसेंस है कि
एक ही है, उसको भगवान बोलो या जो मर्जी बोलो, एक ही है बस। अद्वैत का मतलब है देयर इज नो सेकंड। द्वैत मतलब सेकंड, अद्वैत मतलब देयर इज नो सेकंड। तो मीन्स कि दिस इज वन मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। तो हमें लग रहा है कि हम सब अलग अलग हैं, बट एसेंशली देयर इज वन डिवाइन। उसको डिवाइन कह लो, वन क्रिएटर बोल लो, जो भी बोल लो उसको, वन लाइफ एनर्जी मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। तो तो जो सतचित आनंद की बात करते हैं, कि जो उस डिवाइन का नेचर ही जॉय है, लव है, कंपैशन है, तो वी आर ऑल बीइंग्स ऑफ जॉय, लव एंड कंपैशन, क्योंकि हम वही हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया है स्पिरिचुअलिटी का। तो जो आप मुझे कह रहे थे कि वो जब जिस बंदे को एक्सपोजर है ही नहीं बाहर से, वो कैसे सोच पाएगा, तो अंदर से तो बहुत डीपेस्ट पार्ट से तो हम हैं कनेक्टेड। ओके। Okay. तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ नहीं मिलेगा तो अंदर से स्कोप नहीं, अंदर से बहुत गहरे में तो है वो कनेक्शन। जब बन जाएगा तो बन जाएगा, तो फिर बाहर की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ऑफ कोर्स बात है। अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं, मतलब प्रहलाद, जो अगर आपने कभी नाम सुना हो, प्रहलाद भगत, वो हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यप वॉज अ पर्सन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ गॉड। वो खुद ही बोलता था मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं भाई, जो भी है, तू तो नहीं है। तो तो अब वो उनको कोई बाहर से तो कुछ नहीं मिला प्रहलाद जी को, अंदर से ही था। तो ऐसा तो नहीं है कि अंदर से, और ये सारी मतलब वो तो चलो एक्सट्रीम एग्जांपल मैं ले लिया फिर से, बट बहुत सारी चीजें अंदर से भी आ सकती हैं। इट इज जस्ट दैट कि बाहर से भी आएंगी तो एडिशनल सपोर्ट है, एडिशनल चांसेस बढ़ जाते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाता है। Hmm. Okay. How did you gain support from your family to pursue these things? यार मतलब when I left my first job in 2012, जब मैं यस बैंक में था उससे पहले, तब तो मैंने छोड़ने के बाद ही बताया था फैमिली को कि मैंने छोड़ दिया। सो देन माय मदर, तो इन एनी केस इन माय फैमिली आई we didn't have much of an extended family, so we just the siblings and parents mainly. Of course we were in connect, but it was not a very regular that they would intervene in our decisions, the extended family members I'm talking about. So it is just, and within my family also, my father was not really into all these things. He was just in his work and all that. So it was mainly my mother uh, who would have sort of intervened. So, but when I told her after leaving my job, and then she was like, okay, if you have left it, then it's fine. First, she thought that uh, I had not left. I was just telling her that I am going to leave. So then she argued that, okay, don't leave your job. First get another job, then leave. But when I told her that I have already left, then she was like, okay, then don't worry. Whatever happens will happen for your best. So don't worry. So she was more focused on my well being rather than the job and all that. So that was when I left uh, Yes Bank in 2012. When I left EGMAT, um, yeah, again, there was not, uh, I don't think, yeah, there was a lot. I don't think there was a lot of pressure. Uh, I was just, yeah, I was just taking my calls. I didn't have to really thoroughly explain. I just told them I left because I was not liking or something. There was not much pressure there. Yeah. So there was financial independence in a way that, yeah, the family was not really dependent on me. So I belong to a lower middle class family, but people were just earning whatever they were earning. Uh, so it is not that they were asking me, and I had already contributed, as I said. Uh, so it is not that they were still asking me to keep earning so that I could give to them. That was not the case. Yeah, there was not much pressure there.
Okay. Anything else? मतलब सब, आई थिंक देर इज वन कंसेप्ट इन सिखिज्म, होमे, जो बहुत बार यूज करते हैं। तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट इतना अवेयर हूं मैं कि मतलब एक टू नॉट टू डिसोसिएट योर सेल्फ लाइक फ्रॉम द ईगो एक तरह से। तो वो मतलब बहुत वाइड कंसेप्ट है आई बिलीव, बट if you can shed some light on it, like how can we like apply it in our daily lives? देखो, जैसे मैंने बोला कि जो बेसिक जो कोर एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का या धर्म का, वो तो है वननेस का, कि वी आर ऑल वन। एक्चुअली तो हमें का एक डेफिनेशन तो ये, अगर यही डेफिनेशन है कि अपने आप को अलग मानना, विच इज व्हाट वी ऑल डू। तो तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो से कि द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना, या डुअलिटी से वननेस की तरफ जाना, बेसिकली ये स्पिरिचुअल जर्नी है इन टर्म्स ऑफ एट वन लेवल। उसके ऑफ कोर्स से बात है इंटरमीडिएट स्टेप्स देखा जाए या पाथ को देखा जाए, तो वी कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स। तो अब बात आ गई कि हम में, जैसे आपने बोला ईगो, बेसिकली इट्स कंसिडरिंग योरसेल्फ, एज आई सेड, सेपरेट, कि मैं कुछ और हूँ, वो कुछ और है, ये दुनिया कुछ और है, यहाँ बड़े सारे लोग हैं, मैं कुछ और हूँ। वर्सेस द रियलिटी इज, एज पर स्पिरिचुअलिटी अगेन, कि देर इज जस्ट वननेस, देर इज नो डुअलिटी, कि यू आर नॉट सेपरेट, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट वननेस, सिंगलनेस। तब इसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है? एक, इसका जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि what you do to another is what you do to your own self, क्योंकि eventually there is no other, जो हमारे पास जजमेंट के रिस्पेक्ट में भी हुई थी। मतलब देर आर मल्टीपल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, बट एक इम्प्लीकेशन तो ये भी है कि what you do to another, मतलब ये मोरालिटी भी बन जाती है, बट इट इज नॉट, मतलब ऑफ कोर्स बात लोग मोरालिटी की तरह इसको बात करते हैं, बट यहाँ पे मैं रियलिटी की तरह बात कर रहा हूँ, मोरालिटी नहीं, कि नॉट व्हाट यू शुड डू, आई एम सेइंग व्हाट इज द केस, कि जो भी तुम दूसरे के साथ कर रहे हो, वो तुम अपने साथ ही कर रहे हो। दिस विल जस्ट मैनिफेस्ट विद इन यू एंड आउटसाइड यू, वट एवर यू आर डूइंग। और इसी को लॉ ऑफ कर्मा, जैसे हम लॉ ऑफ कर्मा के एंगल से भी देखोगे तो सेम ही बात है वो। तो बेसिकली इस तरह से जो सारे स्पिरिचुअल आइडियाज हैं वो सारे आपस में रिकनसाइल्ड हैं, सारे ही कंसिस्टेंट है। लॉ ऑफ कर्मा के एंगल से भी देखोगे तो जो भी तुम कर रहे हो वो तुम अपने साथ ही कर रहे हो, बिकॉज वही तुम्हारी चॉइसेस हैं, दोज आर योर चॉइसेस। Your life is not governed by the choices made by others. Your life is governed by the choices that you make. That is your karma. और हम constantly we are thinking what the other is thinking, what the other is doing. But per spirituality, per the law of karma, the only thing that matters is what you choose, what you think, what you do, what you say. That's what matters. Okay, yeah, thank you. Okay, anything else? Okay, nothing else, then good to go. So Sri Harsha, I think, right, we'll meet tomorrow, 8 a.m. IST. Great. Have a good night. Share, it's my morning.
Have a good rest of the day. Okay, bye bye. Thank you for coming. Thank you, Vijay. Thank you so much. Good night. Thank you. Bye bye. Good night, everyone.